बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने बात की थी लीजिंग के बारे में। ऑपरेशनल लीज क्या होती है, कैपिटल लीज क्या होती है। आज हम बात करेंगे कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के बारे में। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर्ड इन फाइनेंस। तो आप लोग जानते हैं capital budgeting techniques होती क्या है? These are the methods which are used by the business to evaluate and prioritize the projects which are long-term investment projects। ठीक है, तो हमारे पास जो मेजर थ्री टेक्निक्स होती हैं जिनमें एनपीवी होता है, आईआरआर होता है और पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना होता है। तो अगर हम फर्स्ट वन को देखें, पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड क्या होता है? This technique calculates the time required to recover the initial investment through cash flow generated by the project। कि आप जो प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक प्रोजेक्ट पर 100,000 इन्वेस्ट किया है और वो आपको अगले 5 साल तक 40,000 रिटर्न दे रहा है, तो आपको कितना टाइम लग रहा है भाई अपना इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए? तो क्या है, 2.5 ईयर होंगे आपके, ठीक है। टू 2 ईयर्स में 80,000 आ जाएगा, नेक्स्ट हाफ ईयर में आपका 100,000 आ जाएगा। द शॉर्टर द पे बैक पीरियड द बेटर द इन्वेस्टमेंट। तो जितनी जल्दी आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। NPV is the most important method. This technique calculates the present value of all cash inflows and outflows associated with a project. If the NPV is positive, the investment is considered positive. अगर आपकी NPV जो है वो greater than 1 आ रही है, it means it's a positive and you accept this one. IRR stands for internal rate of return. This technique calculates the rate of return that makes the NPV of a project equal to zero. If the IRR is greater than required rate of return, the investment is considered profitable, right? Then हमारे पास profitability index आती है। This technique is the ratio of the present value of expected cash inflow to the initial investment. The profitability investment greater than 1 indicates the investment is profitable। तो यहाँ पर जस्ट मैं आपको डेफिनेशंस की हद तक ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में हमने जो है अपने लेक्चर्स में बहुत कुछ कवर किया हुआ है। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या होता है? दिस टेक्निक इज सिमिलर टू द पे बैक पीरियड, बट इट टेक्स इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी बाय डिस्काउंटिंग फ्यूचर कैश फ्लोज। द शॉर्टर द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड द बेटर द इन्वेस्टमेंट इज। देन एक और हमारे पास एक टेक्निक होती है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो फर्स्ट थ्री ही हैं। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। दिस टेक्निक इज सिमिलर टू IRR, but it assumes that positive cash flows are reinvested at a predetermined rate, while negative cash flows are financed at the cost of capital, right? नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ बजट्स, कि हमारे पास जो बजट्स हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं। तो मोस्टली हमारे पास जो बजट्स की टाइप्स हैं उनमें हमारे पास सबसे पहले आता है पर्सनल बजट। दिस इज़ द बजट क्रिएटेड बाय एन इंडिविजुअल और अ फैमिली टू मैनेज देयर पर्सनल फाइनेंस। इट इज़ typically includes expenses such as rent, mortgage, utilities, groceries, transportation, entertainment and saving, जैसा कि मेरा और आपका होता है। फिर पर्सनल बजट आता है। इट इज़ अ बजट क्रिएटेड बाय अ कंपनी टू मैनेज इट्स फाइनेंसेस। इट टिपिकली इंक्लूड एक्सपेंस सच एज सैलरीज, रेंट, यूटिलिटीज, इन्वेंट्री, एडवर्टाइजिंग एंड टैक्सेस वगैरह इसमें आ जाते हैं। फिर कैश बजट क्या होता है? दैट फोकस ऑन ट्रैकिंग एंड मैनेजिंग कैश फ्लो। It helps individuals and businessmen to ensure they have enough cash on hand to cover their expenses. फिर कैपिटल बजट क्या होता है? दिस इज अ बजट दैट फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सच एज परचेजिंग न्यू इक्विपमेंट और एक्सपेंडिंग आवर बिजनेस।
It helps businesses to plan for future growth and development, राइट, लॉन्ग टर्म के लिए। और ऑपरेशनल बजट जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, डे टू डे। इट इज़ अ बजट दैट फोकस ऑन डे टू डे एक्सपेंसेस सच एज सैलरीज, रेंट, utilities and supplies. It helps businesses to manage their daily operation and make sure they have enough fund to cover their expenses। ठीक है। फिर हमारे पास प्रोजेक्ट बजट होता है। दिस इज अ बजट दैट इज क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और इवेंट। इट इंक्लूड एक्सपेंस रिलेटेड टू प्रोजेक्ट और इवेंट सच एज मटेरियल, लेबर एंड मार्केटिंग। मतलब कि जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है वो इसमें आप कवर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बजटिंग मेथड। अब बजटिंग के बारे में तो हमने देख लिया। अब बजटिंग मेथडोलॉजीज या इसके मेथड्स के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है ज़ीरो बजट। सबसे पहले ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग क्या कहता है? दिस मेथड इन्वॉल्व स्टार्टिंग ईच बजटिंग पीरियड विद अ ज़ीरो बैलेंस and then assigning funds to different categories based on priority and expenses। ठीक है, मतलब कि आप ज़ीरो से बैलेंस स्टार्ट करते हैं और हर प्रोजेक्ट की वेटेज के मुताबिक वैल्यूज असाइन करते हैं। फिर एक और फिगर है 50-30-20 बजटिंग। This method involves dividing income into three categories: 50% for needs, 30% for wants, and 20% for saving। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। इसको बहुत सादा लफ्ज़ों में लिखी हुई है। ठीक है। मतलब 50% जो बजट का है वो आप अपनी बेस मतलब नीड्स को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सनल बजट की बात हो रही है, बिजनेस बजट की बात हो रही है। ठीक है। फिर envelope budgeting. This method involves dividing expenses into categories and allocating a certain amount of cash into envelopes for each category. Once the money in an envelope is gone, spending in that category, it should be stopped ताकि इसके ऊपर दोबारा काम खर्च हो। The cash flow budget क्या होता है? This method involves tracking income and expenses to ensure that more money is coming in than going out। ये इंश्योर करते हैं कि कैश इनफ्लो जो है वो is a strong position as compared to cash outflow। फिर आता है द बैलेंस्ड मनी फार्मूला। दिस मेथड इन्वॉल्व एलोकेटिंग अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इनकम टू डिफरेंट कैटेगरीज सच एज हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन या फूड वगैरह के लिए जो है वो आप अपने इनकम का एक फिक्स्ड पोर्शन रख लेते हैं। फिर आता है द प्रायोरिटी बेस्ड बजट। दिस मेथड इन्वॉल्व्स लिस्टिंग आउट ऑल एक्सपेंसेस। आप पहले एक्सपेंसेस को लिखते हो, फिर उन्हें प्रायोरिटाइज करते हो उनकी अहमियत के मुताबिक, विद द मोस्ट एसेंशियल एक्सपेंस टेकिंग प्रायोरिटी ओवर डिस्क्रिशनरी वन। ठीक। फिर बजट प्रिपरेशन टेक्निक्स हैं, इसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास एक तो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग है, अभी हमने डिस्कस किया है कि हम बजट को प्रिपेयर करते हैं बिल्कुल ज़ीरो से। इंक्रीमेंटल बजटिंग क्या होती है कि एक होता है हमारे पास बजट पहले से बना हुआ है पिछले सालों का, हम उसी में कुछ परसेंटेज अप डाउन कर देते हैं। दिस इज़ अ बजटिंग टेक्निक वेयर अ बजट फॉर द नेक्स्ट पीरियड इज प्रिपेयर्ड based on the current period's budget। The previous year budget is adjusted for inflation or changes in the organization's circumstances। Zero based budgeting क्या होता है? This is a budgeting technique where the budget is prepared from scratch every year, मतलब कि zero से। The organization starts with a zero base and justifies every expense that needs to be included in the budget। जो भी बजट में नई चीज़ ऐड करनी है वो कर लेते हैं। फिर एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग होती है। दिस इज अ बजटिंग टेक्निक्स where the budget is prepared based on the organization's activities। The budget is prepared by identifying the activities required to achieve the organization goal and estimating the cost associated with each activity। ठीक है। आप एक्टिविटीज़ जो आपको रिक्वायर होती हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ये एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्पफुल है। ठीक है। और फिर आप उसके ऊपर कास्ट एसोसिएट करते हैं और इस तरीके से आप लिस्टिंग कर लेते हैं।
फिर टॉप टू डाउन बजटिंग होती है, फिर डाउन टू टॉप या बॉटम टू टॉप बजटिंग भी होती है। टॉप to down budgeting technique where the budget is prepared by senior management and then it is distributed to lower level of the organization. This technique is usually used when the organization has a hierarchical structure मतलब कि जब centralized होता है। फिर bottom up budgeting क्या होता है? This is a budgeting technique where the budget is prepared by lower level management and then it is aggregated to create the overall budget. This technique is usually used when the organization ओके यहाँ तक ही लिखा हुआ है। मतलब ये डिसेंट्रलाइज्ड वे है एक बजट्स को तैयार करने का। आप अपने एम्प्लॉइज को भी अथॉरिटी देते हैं पार्टिसिपेट करने। फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती है अकाउंटिंग में, अगर हम उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें मेरे ख्याल से तो बेहतर होगा इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिक्स्ड कॉस्ट होती है द कॉस्ट विच डजंट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और सेल सच एज आपका रेंट, सैलरीज और इंश्योरेंस आती है। फिर वेरिएबल कॉस्ट होती है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्स सच एज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, कमीशन पेमेंट। जितनी सेल्स होगी उतनी ही इसकी कॉस्ट ज़्यादा आती जाएगी। सेमी वेरिएबल ऐसे होते हैं which have both features of the fixed and variable cost such as utility bills। utility bills कैसे सेमी वेरिएबल हैं? अगर आप ना भी प्रोडक्शन करो फिर भी आप लाइटिंग तो होती रहती है ना बिल्डिंग में, अगर आप कर रहे हैं तो अब आपको कैसे पता चल रहा है कि ये नया यूनिट जो है वो हमारे एसोसिएट है प्लांट के साथ। वेयर अ पोर्शन ऑफ द कॉस्ट इज फिक्स्ड एंड रिमाइंडर वेरीज बेस्ड ऑन यूसेज। ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? These are the costs which are directly related to the production of specific product or service, such as cost of material, labor, and equipment. Indirect cost क्या है? The cost which is not directly related to the production of specific product or service, such as overhead cost, like rent, utility, administrative expenses. फिर आता है अपॉर्चुनिटी कास्ट। अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है? द कास्ट रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल बेनिफिट that are foregone when the alternative is chosen over another। ठीक है। अपॉर्चुनिटी कास्ट की और भी डेफिनेशन है। अपॉर्चुनिटी कास्ट इज अ कास्ट which we have foregone by choosing the best one। जैसा कि एक बंदा है उसको वो भी जॉब कर रहा है करंटली 1 लाख रुपया उसकी सैलरी है। अगर उसको कोई ऑफर आ जाती है कि हम आपको 150,000 पे करेंगे तो वो जो 150,000 का ऑप्शन उसने चूज़ कर लिया और जो ऑप्शन उसने छोड़ा है 1 लाख वाला वो 1 लाख उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट है। ठीक। सच एज द लॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम चूजिंग टू प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट ओवर एनदर। फिर संक कास्ट क्या होती है आपकी? अच्छा यहाँ पर बता दूँ एक और चीज़ रेलिवेंट और इरेलीवेंट की। रेलिवेंट कास्ट वो होती है जो कि आपके फ्यूचर डिसीजंस को इम्पेक्ट करती है और इरेलीवेंट कास्ट वो होती है कि जिससे आपको कोई मतलब कि आप उसकी वजह से आपने डिसीजन नहीं चेंज कर रहे, आपके ऊपर कोई इसका इम्पेक्ट नहीं आ रहा इन फ्यूचर कोई भी प्रोजेक्ट में। तो संक कास्ट जो है वो उसकी बेस्ट एग्जांपल है इररेलेवेंट कास्ट। दीज आर द कास्ट दैट हैव ऑलरेडी बीन इनकर्ड, जो पहले हो चुकी हैं एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड और हम उनको रिकवर नहीं कर सकते। सच एज द कास्ट ऑफ इक्विपमेंट दैट हैज ऑलरेडी बीन परचेज्ड। फिर हमारे पास मार्जिनल कास्ट आती है। दीज आर द एडिशनल कास्ट that are incurred when producing one more unit of a product or service। कि एक यूनिट आप इजाफी जो प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर आपका कितना खर्च आ रहा है। जैसा कि अगर हम एक यूनिट बना रहे हैं उसके ऊपर हमारा 100 रुपीज़ आ रहा है, अगर हम एक और नेक्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो इन दोनों का एक्सपेंस हमारा जो है वो 150 रुपीज़ आता है। तो जो नेक्स्ट हमारा लग रहा है 50 रुपीज़ लग रहा है, हालांकि पहले यूनिट को बनाने में हमें 100 रुपीज़ लगे हैं, दूसरे को बनाने में हमें 50 रुपीज़ लगे हैं। ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी कंसेप्ट इसमें आ जाता है। राइट।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉस्ट सेंटर्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉस्ट सेंटर्स अक्सर हम वर्ड सुनते हैं कि एक एम्प्लॉय अगर एक डिपार्टमेंट से जाकर दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र हो गया तो उसका कॉस्ट सेंटर तब्दील हो गया। In English, a cost center refers to a department or area within a business or organization that is responsible for incurring costs, but does not directly generate revenue or profit for the organization. ठीक है, cost center are often established to help management to track and control expenses and may include areas such as administration, maintenance, research and development. ठीक है, the primary goal of the cost center is to manage and allocate expenses in an efficient and effective manner in order to support the overall financial health of the organization. ठीक है, उम्मीद है बात फॉलो कर होगी आप। फिर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बहुत अहम है, कास्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में क्या कहता है? A cost of production report is a document that summarizes the cost associated with producing goods or services। कि आप जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर कितनी आपकी कॉस्ट इंकर्ड हुई है, तो वो सारी डिटेल आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में लिखी जाएगी। द रिपोर्ट टिपिकली इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन सच एज टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, overheads used in production process as well as any variance from the expected cost। ठीक है, फिर इसी के बारे में मजीद आपको बताता है कि दिस रिपोर्ट इज यूज्ड बाय मैनेजमेंट टू एनालाइज द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस and identify areas where cost saving can be made. It can also be used to help determine the selling price of product or service as well as to evaluate the profitability of different product lines। ठीक है, बस पहले वाले ही आप देख लीजिएगा कि टूल है जो कि आपको डिटरमिन करती है अपना सेल्स वॉल्यूम वगैरह के लिए। फिर सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीवीपी इज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल दैट हेल्प बिजनेसेस टू डिटरमिन हाउ चेंजेस इन सेल्स वॉल्यूम, कॉस्ट एंड प्राइस विल इफेक्ट देयर प्रॉफिट। कि कितने यूनिट ये प्रोड्यूस करें तो इनको प्रॉफिट आना शुरू होगा, कितने यूनिट्स के ऊपर इनका ब्रेक इवन है, और मैक्सिमम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, उसके बाद इनको लॉस होना शुरू हो जाएगा। It is a method which is used to understand the relationship between a company's revenue, expenses and profit at different level of production or sales। ठीक है, इतनी देख लो, बढ़िया। फिर अगर हम कुछ बात करें डिविडेंड की और डिविडेंड से रिलेटेड टर्म्स की, तो हमारे पास सबसे पहले आता है डिविडेंड की तारीफ। डिविडेंड इज अ पेमेंट विच इज मेड बाय ए कॉर्पोरेशन टू इट्स शेयर होल्डर्स, usually in the form of cash or additional share of stock as a share of the company's profit। तो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो अपने शेयर होल्डर्स को तकसीम करती है, उस प्रॉफिट का नाम डिविडेंड दिया गया है। फिर हमारे पास डिविडेंड यील्ड आती है टर्म। दिस इज द डिविडेंड पेड आउट बाय अ कंपनी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स स्टॉक प्राइस। ठीक है, अपने स्टॉक प्राइस की परसेंटेज वो बताती है कि हमने कितने परसेंट जो है वो डिविडेंड पे किया है, यील्ड किया। फिर डिविडेंड पे आउट रेशियो, दिस इज अ प्रपोर्शन ऑफ कंपनीज अर्निंग दैट आर पेड आउट एज डिविडेंड। A dividend reinvestment plan, it is a plan that allows shareholders to reinvest their dividend into additional share of stock instead of receiving cash payment। क्या मतलब तो वो कैश पेमेंट नहीं देते, वो दोबारा से अपना क्या है वो री इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर एक्स डिविडेंड डेट क्या होती है? इट इज़ द डेट ऑन after which a buyer of stock is not entitled to receive the dividend payment for this period। रिकॉर्ड डेट क्या होती है? इट इज़ द डेट विच अ कंपनी डिटरमन विच शेयर होल्डर्स आर एलिजिबल टू रिसीव अ डिविडेंड पेमेंट। ठीक है, कि कौन से जो हैं शेयर होल्डर वो एलिजिबल हैं
A stock dividend, it is a dividend paid out in term of additional share of stock rather than in cash. अगर आपको डिविडेंड कैश की फॉर्म में नहीं मिलता, इसकी काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। कंपनी को कैश का प्रॉब्लम हो सकता है, वो आपको बदले में एडिशनल शेयर्स ऑफ स्टॉक इशू कर देती है। ठीक है, तो वो स्टॉक डिविडेंड है। स्पेशल डिविडेंड क्या होता है? इट इज़ अ वन टाइम डिविडेंड पेमेंट मेड बाय कंपनी इन एडिशन टू इट्स रेगुलर डिविडेंड पेमेंट्स। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा है इंटीरियम डिविडेंड्स भी होता है। ठीक है, जब कंपनी ड्यूरिंग द ईयर पे करती है। फिर प्रेफर्ड स्टॉक क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टॉक विच पेज अ फिक्स्ड डिविडेंड एंड टेक्स प्रायोरिटी ओवर कॉमन स्टॉक इन द इवेंट ऑफ कंपनी लिक्विडेशन या बैंकरप्सी। इसको प्रेफर्ड स्टॉक को हम हाइब्रिड सिक्योरिटी भी बोलते हैं, विच हैव द फीचर्स ऑफ बोथ शेयर्स एंड डेट। ओके, अगर हम स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक क्या क्या होता है? Stock is also known as the share or equity, a unit of ownership in the company. When you purchase a stock, you become shareholder of the company and you are entitled to get the profit. ठीक है, तो जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, हमने बात की है कि वो क्रेडिटर्स होते हैं, वो कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं। There are several type of stock, including common stock. This is the most common type of stock and represents ownership in the company. Common stockholders have voting right in the company, and that may receive dividend if the company choose to pay them. अगर कंपनी उनको चूज करती है, ठीक है, उनको और भी बहुत सारे राइट्स होते हैं, वोटिंग राइट्स है, बुक्स को इंस्पेक्शन कर सकते हैं, मैनेजमेंट में भी हिस्सा ले सकते हैं। फिर प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं उससे ऊपर वाले लेवल के। प्रेफर्ड स्टॉक हैव shareholder have a higher claim on the company's asset and earning as compared to common shareholder. They are typically paid dividend before common shareholder and they have fixed dividend rate. फिर हमारे पास आते हैं ब्लू चिप स्टॉक। दीज आर द स्टॉक ऑफ लार्ज established company with the history of stable earning and strong reputation होती है। They are considered to be low risk investment होती है। ठीक है, क्योंकि established companies होती हैं। और आपने पढ़ा होगा एक कमर्शियल पेपर भी। कमर्शियल पेपर क्या होता है? वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि वेल नोन कंपनीज इशू करती हैं जनरल पब्लिक से पैसा लेने के लिए। फिर ग्रोथ स्टॉक होते हैं। देयर आर स्टॉक ऑफ कंपनीज दैट आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ हायर रेट देन द ओवरऑल मार्केट। They may not pay dividend, but their potential for growth may make them attractive for investors. हो सकता है कि वो आपको डिविडेंड ना दें, ऑप्शनल है, बट उनका चार्म क्या होता है कि उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो बड़ी जल्दी बढ़ती है। फिर वैल्यू स्टॉक क्या होता है? दी आर स्टॉक ऑफ कंपनीज दैट आर अंडर वैल्यूड बाय द मार्केट। अभी जो है वो अंडर वैल्यू होते हैं, तो इन्वेस्टर जो है मे परचेज दिस स्टॉक इन द होप दैट दे विल इंक्रीज इन वैल्यू एज द मार्केट करेक्ट इट्स अंडर वैल्यूएशन। कि जैसे मार्केट ने अंडर करेक्शन होना है या अपनी असल पोजीशन पे आएगी तो उनकी कीमत बढ़ जाएगी, तो लोग खरीद कर रख लेते हैं। फिर पेनी स्टॉक होते हैं। दीज आर द लो प्राइस्ड स्टॉक ऑफ स्मॉल रिलेटिवली अननोन कंपनीज। दे आर कंसिडर्ड हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ड्यू टू देयर वोलाटिलिटी एंड लैक ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, इनकम स्टॉक क्या होते हैं जो कि आप अट्रैक्टिव होते हैं डिविडेंड की वजह से। These are stock of companies that pay high dividend. They are attractive to investors looking for a steady stream of income. In the stock market, आप लोग एक और वर्ड भी बड़ा अच्छी तरह से जानते हो, bear rush and bullish market. Bull and bear are terms used to describe the general statement or outlook of investors towards the market या तो particular stock की तरफ देखते हैं। तो बुल क्या होता है? इज अ मार्केट विच इज करेक्टराइज्ड बाय राइजिंग प्राइसेस। आप ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ऑप्टिमिज्म एंड अ पॉजिटिव आउटलुक अमंग इन्वेस्टर। इट इज often associated with economic growth
low unemployment, and strong corporate earnings. In a bull market, investors are typically more willing to buy stock, anticipate that they will continue to increase in value. आज वो देखते हैं कि स्टॉक जो है वो हमें सस्ता मिल रहा है शेयर्स, तो वो खरीद के रख लेते हैं इस उम्मीद पर कि मुस्तकबिल में जो है वो कीमतें बढ़ेंगी तो हमें मुनाफा होगा, हम बेच देंगे। जबकि इसके अपोजिट साइड बियरिश मार्केट में ये होता है कि लोगों को फियर होता है कि आइंदा आने वाले दिनों में शेयर्स की प्राइसेस डाउन हो जाएंगी, तो उनके पास जो होते हैं शेयर वो बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ताकि उन्हें लॉस ना हो। On the other hand, a bear market is characterized by falling prices, आप pessimistic होते हैं और negative outlook होती है among investors. It is often associated with economic contraction, high unemployment, and weak corporate earnings. In a bearish market, investors are typically more cautious and may sell stock in anticipation of further decline in value. कि हमें मज़ीद नुकसान ना हो उससे बचने के लिए ये शेयर्स को बेच देते हैं। फिर हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आ जाता है डू पॉन्ट फार्मूला। इसका इसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये रिटर्न के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। DuPont formula is a financial ratio analysis method that breaks down a company's return on equity into three components: net profit margin, asset turnover, and financial leverage. This method provides a more detailed understanding of the factors that drive a company's ROE and can help to identify area of strength and weakness in operation. मतलब कि आप ROE को मल्टीप्लाई करते हो ROA के साथ। तो क्या फार्मूला है आपके पास? नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन का हमने क्या फार्मूला पढ़ा था? अगर आपको याद हो तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। फिर एसेट टर्नओवर हमने क्या पढ़ा था? और फाइनेंशियल लीवरेज का। Net profit margin represents the company's profitability as percentage of sales. वही बात आ गई ना कि net profit divided by sale. It is calculated by dividing net income by revenue. A high net profit margin indicates that the company is generating a significant profit from its operations. जबकि asset turnover, this ratio represents how efficiently the company is using its assets to generate revenue. It is calculated by dividing revenue by total asset. The high asset turnover ratio indicates the company is effectively using its assets to generate sales, right? मतलब कि net profit divided by total asset. फिर financial leverage क्या होता है? This represents the degree to which the company is using debt to finance its operation. It is calculated by dividing total asset by shareholders' equity. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो फार्मूला, तो वो एसेट्स के साथ नॉमिनेटर डिनोमिनेटर कट जाएंगे, सेल्स भी आपस में, ठीक है, मतलब वो कट जाएंगे, नेट प्रॉफिट भी आपस में वो हो जाएगा। A high financial leverage ratio indicates that the company is relying heavily on debt to fund its operations. By breaking down ROE into three components, DuPont formula can provide insight into company overall financial health. For example, a company with high ROE may have achieved it through a high net profit margin, through high asset turnover, high financial leverage. So this is used for better decisions about whether to invest in the company or to not invest. इस तरह हमारे पास जो DuPont फार्मूला है उसका एट द एंड रिजल्ट क्या आता है? नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी। क्योंकि टोटल एसेट आपस में कट जाएंगे, ऐसे ही रेवेन्यूज के साथ कट जाएगी, तो पीछे हमारे पास नेट इनकम और डिवाइडेड बाय इक्विटी हमारे पास आ जाएगा इसका फार्मूला। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड आती है गैप के बारे में। मैंने लिखा है कि आपको आइडिया होना चाहिए कि गैप क्या होता है, यूएस गैप। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, दे रेफर टू द सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल
standards, and procedures that are commonly used in preparation and presentation of financial statements. These principles provide a framework for companies to record and report their financial information accurately and consistently, which helps to ensure that financial statements are reliable and meaningful. फिर कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग की टर्म्स हैं आपके सामने शेयर हो रही हैं, जिसमें सबसे पहले जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग आता है, ठीक है, और प्रोसेस कॉस्टिंग. These are the two systems which are used in accounting to calculate the cost of producing goods or services. Here are the main difference between these two. Job order costing method is used when a company produces customized product or service based on special कस्टमर ऑर्डर. अगर कस्टमर जो है वो स्पेसिफिक ऑर्डर देता है तो ये तैयार करते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में. द कॉस्ट ऑफ ईच जॉब इज traced separately, and the final cost of the product or service is calculated by adding up all the costs associated with that particular job. This system is often used in industries such as construction, printing, and custom manufacturing. कि आप कस्टमर की इंडिविजुअल नीड्स के मुताबिक जो है उसका प्रोडक्ट डिलीवर करते हो. जबकि प्रोसेस कास्टिंग में क्या होता है कि एक लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस बना रहे होते हैं, जिसमें किसी की कोई पसंद नापसंद का ख्याल नहीं रखा जाता, जैसा कि सीमेंट इंडस्ट्री है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, बेवरेजेस आती हैं. तो प्रोसेस कास्टिंग दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द कंपनी प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल or similar product or service in a continuous production process. The cost of each process is traced separately, and the final cost of product or service is calculated by averaging the cost across all the unit produced. This system is often used in industries such as food and beverages, chemical manufacturing, or oil refinery. So as a result, in summary, the job order costing is used for customized product and services, while process costing is used for large-scale production of identical or similar products and services. फिर हमारे पास लीवरेज के बारे में बात करते हैं. नया टॉपिक आता है. लीवरेज भी हमारे पास टू टाइप्स का होता है, फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग. लीवरेज रेफर्स टू द यूज ऑफ बारोड फंड, कि आपके पास जो डेट है टू इंक्रीज द पोटेंशियल रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट. आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें डेट का क्या रोल है. इन जनरल देयर आर टू टाइप ऑफ लिवरेज, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग. This type of leverage involves using borrowed funds to increase the potential return on an investment. This can be done by borrowing money from a bank or other financial institution, or by issuing bonds or other debt securities. The goal of financial leverage is to generate a high return on investment as compared to cost of borrowed fund. ठीक है. जबकि ऑपरेटिंग फंड क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स using fixed cost to increase the potential return on an investment. Fixed cost को use करके. Fixed cost are expenses that don't change regardless of the level of output or sale. तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी क्या हो सकती है, आपका इंटरेस्ट रेट हो सकता है. A company can increase its profit margin as sales increase, leading to high return on investment. एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट आपकी क्या है, रेंट, सैलरीज और इंश्योरेंस आ जाती है. बोथ टाइप ऑफ लिवरेज कैरीज रिस्क. तो जितना ज़्यादा लिवरेज होगा इतनी ही कंपनी ज़्यादा रिस्की होगी. As well as potential rewards, investors should carefully consider the risk and benefit of leverage before making any investing decision. Then हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं. ओके, आईटी, ये ना यहाँ पर सही लिखा हुआ, ये जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम है. Just in time inventory system is a production strategy that aims to produce only what is needed, when is needed, and the quantity required. The goal is to eliminate waste, reduce inventory cost, and improve efficiency by closely coordinating the production process in demand. Just-in-time inventory is often associated with the Toyota production system,
which emphasize continuous improvement, waste reduction and respect for people. अब ये जापान वगैरह में ऐसे ही होता है कि लोगों इन्वेंट्री स्टोर करने के ऊपर इतना खर्चा नहीं करते, जब ज़रूरत होती है ऑर्डर करते हैं, वो चीज़ रेडी होकर उनके पास आ जाती है। फिर एक और टर्म है केजन, ये भी जापानीज टर्म है विच मीन्स इम्प्रूवमेंट और चेंजेस फॉर द बेटर। It refers to problem-solving approach that involve identifying and addressing the root causes of issue in the workplace. Kaizen involve a structured process of analysis, brainstorming, experimental and implementation with the focus on continuous improvement. ठीक है। फिर ट्रेजरी स्टॉक क्या होते हैं, टी स्टॉक भी बोलते हैं, आर द पोर्शन ऑफ द कंपनी शेयर दैट आर हेल्ड बाय इट्स ट्रेजरी एंड नॉट अवेलेबल टू पब्लिक। टी स्टॉक can come from a company's float before being repurchased or from the shares that have not been issued to the public at all, जो लोगों को इशू नहीं किए। फिर हमारे पास कुछ स्टॉक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाती है। लेक्चर लेंथी हो रहा है आई नो, बट आप स्टॉप करके देख सकते हैं। स्टॉक क्या होता है, अ शेयर इन द ओनरशिप ऑफ कंपनी दैट रिप्रेजेंट अ क्लेम ऑन अ पार्ट ऑफ द कंपनी एसेट एंड अर्न। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है, एक मार्केट है वेयर स्टॉक्स आर ट्रेडेड आइदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली। तो मैं फाइनेंस का इंशाल्लाह पोर्शन जो है वो एक डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा, जो हमारे स्टूडेंट्स उसको अवेल कर लेंगे, तमाम टर्म्स उसको कवर कर लेंगे। शेयर क्या होता है, शेयर इज द यूनिट ऑफ ओनरशिप इन द कंपनी दैट रिप्रेजेंट अ क्लेम ऑन द पोर्शन ऑफ इट्स एसेट एंड अर्निंग। ठीक है। ब्रोकर कौन होता है, जिसको एजेंट भी कहते हैं, एंड इंडिविजुअल आर फर्म दैट बाय और सेल स्टॉक ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। अगर कोई फॉर्म ले रही है तो वो अंडर राइटिंग का भी हम उसको कहते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, द टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ स्टॉक calculated by multiplying the number of outstanding share by current market price। ये देख लीजिएगा। द टोटल वैल्यू ऑफ कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ स्टॉक, इस वक्त मार्केट में कंपनी की कितनी वैल्यू पे शेयर जो है वो रोटेट कर रहे हैं, इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय द नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस। ठीक है। अगर 1000 शेयर है तो 1000 का एक है तो उसको मल्टीप्लाई करें। डिविडेंड क्या होता है, दिस इज द पोर्शन ऑफ द कंपनीज अर्निंग दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। आईबीओस क्या होते हैं, द फर्स्ट सेल ऑफ कंपनी स्टॉक टू द पब्लिक टिपिकली टू रेज कैपिटल फॉर द कंपनी। जो पहली दफ़ा कंपनी अपने शेयर स्टॉक पर सेल करती है उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। बुल मार्केट, बियरिश मार्केट हो गया। इंडेक्स अ मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टॉक, एक मुख्तलिफ कंपनीज के स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। टू ट्रेस द परफॉर्मेंस ऑफ पार्टिकुलर मार्केट और इंडस्ट्री, एग्जांपल इसमें S&P 500, डॉ जोन्स इंडस्ट्री वगैरह आ जाती है। वॉल्यूम क्या है, अच्छा आप ये अगर स्टॉक एक्सचेंज को कर रहे हो तो दुनिया की टॉप 5 स्टॉक एक्सचेंज का नाम भी याद कर लीजिएगा। वॉल्यूम क्या है, द टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफ स्टॉक विच आर ट्रेडेड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फिर हमारे पास प्राइस टू अर्निंग रेशियो आ जाती है। प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग। ठीक है। ब्लू चिप स्टॉक क्या होती है, द स्टॉक ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज विद द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्टेबल अर्निंग एंड डिविडेंड पेमेंट्स, ये ब्लू चिप स्टॉक होते हैं। पेनी स्टॉक हो गया है शॉर्ट सेलिंग, द सेल ऑफ borrowed stock with the expectation that the stock price will decline, ये वो बुलिश वाला आ जाता है कंसेप्ट इसमें। allowing the seller to buy back the stock at the lower price and profit from the differences। ठीक है, ये भी पेसिमिस्टिक अप्रोच है। फिर मार्जिन हम देख लिया, मार्जिन क्या होता है, अमाउंट ऑफ मनी दैट ट्रेडर मस्ट डिपॉजिट विद द ब्रोकर इन ऑर्डर टू ट्रेड ऑन मार्जिन विद फ्यू फंड्स वगैरह लिए होता है। फिर ऑप्शंस क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दैट गिव द होल्डर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल एंड अंडरलाइंग एसेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑन और बिफोर अ स्पेसिफिक डेट।
और फ्यूचर्स क्या होते हैं कि these are also financial contract that oblige the buyer and seller to buy or sell an underlying asset at a specific price on or before a specific price। ठीक हो गया। तो इसमें क्या होता है कि होल्डर्स को राइट भी होता है और ऑब्लिगेशन भी होता है उसका। ठीक है। स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या आता है? एन ऑर्डर प्लेस्ड बाय ट्रेडर टू ऑटोमेटिकली सेल अ स्टॉक if it falls below a specific price in order to limit potential fight। आप मतलब an order placed by trader to automatically sell a stock आप ऑर्डर दे देते हैं कि भाई अगर इस कीमत से नीचे ये शेयर गिरता जाए तो आप फौरन सेल कर देना। वोलेटिलिटी केस को रेफर करती है, फ्लक्चुएशन को साइड करती है। The degree of fluctuation in stock price typically measured by standard deviation of the stock return over a given period of time। फिर अगर हम बात करें तो लास्ट 2 स्लाइड्स रह गई हैं। तो डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर पार्टीज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट आर। ठीक है। द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव इज derived फ्रॉम द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। डेरिवेटिव कैन बी यूज्ड टू हेज रिस्क और स्पेकुलेट ऑन फ्यूचर प्राइस मूवमेंट। आप फ्यूचर प्राइजेस के बारे में स्पेकुलेशन कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं, हेज कर लेते हैं। तो इसकी टाइप्स क्या हैं? फ्यूचर है जो अभी हमने पढ़ा है, ऑप्शंस हैं, स्वैप है। स्वैप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज कैश फ्लो एट स्पेसिफिक इंटरवल। स्वैप कैन बी यूज टू हेज रिस्क और टू स्पेकुलेट ऑन फ्यूचर इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स के बारे में बात करता है। फिर इसमें फॉरवर्ड आते हैं कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड जो है ये कौन से होते हैं? ये ओवर द काउंटर होते हैं। ठीक है। Similar to future contract, but it is not traded on the exchange. Instead, it is a private agreement between the two parties to buy and sell agreement at specific price in future। ठीक है। फिर CDOs क्या होता है? Collateralized debt obligations। CDO is a type of security debt which is backed by a pool of debt obligation, such as mortgage loan। CDOs are often used by investors to gain exposure to a diversified portfolio of debt securities। फिर CDS भी आता है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। It is a type of insurance contract that pays out in the event of a default by borrower। CDS are often used by investors to hedge against the risk of default by the borrower। तो ये जनाब डिफरेंट टाइप्स थी, उनकी अपने अपने करेक्टरिस्टिक्स भी थी डेरिवेटिव्स के। डेरिवेटिव्स लाजमी पूछा जाता है इंटरव्यू में, जो भी अच्छे इंटरव्यू होते हैं। एंड इन्वेस्टर शुड केयरफुली कंसिडर दिस फैक्टर बिफोर इन्वेस्टिंग इन डेरिवेटिव। तो ये था हमारा आज का टास्क। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ऑडिटिंग, मैनेजमेंट और फाइनेंस के ऊपर अपनी फुल ब्रीफ हासिल करेंगे। अगर आप रजिस्टर होना चाहते हैं ऑनलाइन फन पेपर MCQ, ये जो क्वालिफिकेशन रिलेटेड होते हैं, और इंटरव्यू के लिए यू मस्ट कॉन्टेक्ट एट 0343 0707 116। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।